So we have to start with the new chapter, that is the bills of exchange. What happens is you keep doing multiple of the transactions into your business. Many of your transactions are on cash basis. Many of your transactions are on credit basis. Now, whether the transaction is cash or credit, that doesn't make any difference. All the transactions do come into the books of accounts. However, when it comes to a credit transaction, in such situation, there is an investment required. When you are selling the goods on credit, in that case, in a way, you are making the investment into your debtors or not. Why? Because the goods that you have produced or the goods that you have purchased, those goods you have purchased at a cost, you have produced at a cost, and for a specific period of time, you are giving the goods to your customer without getting the money immediately. तो जितने पीरियड तक आपका कस्टमर आपको पैसा दे नहीं देता, तब तक के लिए this remains as a kind of investment for you or not. And Yes, that sir. is why we call the debtors as our asset. Now understand and observe the part very carefully. This investment in the debtors is required on day-to-day basis, on a consistent basis. And therefore, we call that as investment into the current assets. Now, similar to the investment in the current assets, you also get do the investment in the current you get the funding from your current liabilities in the form of creditors. And the net difference between the current assets and current liabilities is called as working capital of the business. So, you are carrying out your business activities and you are making the investments into your working capital. Now, a question arises that you need to make the investments. So you have to do the funding of this working capital or not. From where do you get the funding for this working capital? Either you invest it into the form of capital, or you bring it in the form of bank loans, or you bring it in the form of bank overdrafts. Now, if you want to fund these working capital requirements, if you want to reduce the gap of your working capital requirement, one of the major source available for that is the bills of exchange or the promissory notes. Why? Because as per the Negotiable Instruments Act of 1881, a bill of exchange or a promissory note is a document which can be transferred from one person to another. And that's the reason it is called as a negotiable instrument. And because this is a transferable document, one, you get the kind of assurance. Assurance in what sense? कि आपने जिस कस्टमर को गुड्स क्रेडिट पे बेचे हैं, वो कस्टमर इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट आपको पैसा जरूर देगा, नहीं तो उसे आप कोर्ट में घसीट सकते हो. Number two, as you are having a legal document available with you, there is a facility available in certain banks that is called as the discounting facility. You can immediately give it to the bank, get the money against that. And by that way, you are creating the liquidity for your working capital requirements or not. Otherwise, क्या होता? अगर सपोज आपने आपके कस्टमर्स को 3 महीने का समय देके रखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द पेमेंट,
तो उससे पैसा 3 महीने बाद ही आएगा या नहीं? इसके बजाय अगर आपने कस्टमर को क्रेडिट पे गुड्स बेचे और उसके बाद उसके ऊपर आपने एक बिल ड्रॉ कर दिया, and against that bill drawn you take it to the bank and get it discounted, तो वो जो पैसा तुमको 3 महीने बाद मिलने वाला था वो पैसा तुमको आज ही मिल सकता है। हाँ, उसके लिए तुमको थोड़ा सा इंटरेस्ट के तौर पे खर्च करना पड़ेगा क्योंकि तुमको पैसा जल्दी मिल रहा है, but you are getting liquidity into your business or not? And when you are getting liquidity, that means indirectly you are funding your working capital requirement. I know majority of you are aware about the accounting entries for the bills of exchange, but it's not only the accounting entries that is important for us, but we need to understand the core concept कि ये bill of exchange concept आखिर आई कहाँ से, and that's why I started from this particular point. In fact, देखा जाए तो बिल ऑफ एक्सचेंज ये आज की कंसेप्ट नहीं है। हमारे देश में बिल ऑफ एक्सचेंज ये ओवरनाइट मतलब ओरिजिनल बार्टर एक्सचेंज के टाइम से चलती आ रही प्रथा है। There was this concept called as hundi, Hundi, hundi. Even in the current days, in the southern part of our country, even in the current days, the hundi concept is followed, wherein the people draw these notes on one another for the purpose of carrying their business activities. No, Harshad Mehta's fraud was not only because of bill of exchange, it was because of the commercial papers. Commercial papers are basically the documents which are drawn and accepted by the banks only. The documents which are issued by the government, by the banks is what you call as the commercial papers. So it has nothing to do as such with bill of exchange concept. Now, hundi is the concept which has been going on in the southern part of our country even today. हुंडी क्या होती है? ये एक बंदा दूसरे के ऊपर एक डॉक्यूमेंट ड्रॉ करता है फॉर अ लाइबिलिटी। मुझे याद है देयर वाज दिस टाइम कुछ शायद सिचुएशन बनी थी जिस वजह से मुझे अर्जेंट फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, तो हमारे यहाँ एक लेंडर था, मनी लेंडर, जो मतलब कैश में डील करता था। तो मुझे शायद ऑफिस लेना था या कुछ तो काम था, तो मैंने जब उससे कहा कि मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, तो he said fine, no problem, I'll give you 2 lakh rupees, but against that you'll be required to write on a letterhead that you will be giving the money back to me. So that chitti that I wrote in favor of him was nothing but a kind of promissory note. In that I had mentioned that I promised to pay an amount of rupees 2 lakh after so and so date, and there was no condition being put on that. So these concepts, the bill of exchange, the promissory note concept, is not the current date concept. These are the concepts, those are existing since long. But the point is what? When it comes to the bills of exchange, when it comes to the promissory note, in the current date, it is not very much followed by you and me as the individuals. However, at the corporate levels, at the large level, it is followed even today. You will be finding that at the corporate levels, the big corporates are drawing the bills of exchange in the form of commercial papers from one another, and they're carrying out their transactions. Moreover, those are the accommodation bills. Now, what is that and how that is done? We'll be talking about that at a later point. So, सबसे important point क्या कि bill of exchange ये concept आई क्यों? To secure the credit transactions, to fund the working capital requirements, and based on that you carry out your bill of exchange activities. Now, how this whole process works, let's come on to that process of bill of exchange. I hope I'm going good for everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नहीं तो क्या होता है ना, कई सारे बंदे बीच में कमेंट करते हैं, सर लैग हो रहा है, सर स्क्रीन नहीं दिख रही है,
सर स्क्रीन पे ब्लैक बॉक्स आ गया सर, सर क्या एयरप्लेन में बैठे हैं क्या, कि नेट अच्छा चल रहा है। बेटा नेट अच्छा है तभी तो लोग फंसेंगे ना, नेट बुरा रहेगा तो मछली कैसे फंसेगी, है कि नहीं। असो so how this particular transaction is carried out, let's observe it. There is this person, who is it? Jumru. Our beloved Jumru, Jumru. right? Yes, sir. Yes, sir. And there is another person, Jumri. Jumri. his beloved Jhumri, right? Now you must be missing these two guys like anything, you know. Yes, sir. Yes, sir. Missed a lot. Okay, Champa bhi sir. अकाउंट्स के लेक्चर्स में जिन गहराइयों में हम चीजें सीख रहे हैं, मतलब typically like वो commercial papers and all that, you're learning a lot, you know, but at the same time the ground realities have to be there. तो हुआ यूं कि झुमरी झुमरू के पास आई। झुमरू को ये बात नाराज आई। झुमरू ने झुमरी से कहा, जल्दी से बता क्यों तुझे मेरी आस आई। झुमरी ने झुमरू से कहा, ए झुमरू, तू जो गुड्स बेचता है वो गुड्स की मुझे जरूरत है और पैसा मेरे पास है नहीं। झुमरू कहता है कि भले तुझे गुड्स की जरूरत हो, पर अगर तेरे पास पैसा है नहीं तो मेरे पास भी गुड्स है नहीं। झुमरी कहती है, यार तू तो दगाबाज निकला, तूने तो खड़े खड़े गजब बेइज्जती कर दी मेरी। मैं सोचती थी कि झुमरू ही मेरा यार है, भले नहीं वो मेरा प्यार है, पर मुझे वो हर समय देगा साथ, और तूने कर दी बकवास वाली बात। अब झुमरू कहता है तो बाकी सब बात सही है, दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना, व्यवहार में दोस्ती नहीं लाने का। झुमरी ने झुमरू से कहा, ये बात भी सही है, पर तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है। झुमरू कहता है, पर्सनली बहुत ज्यादा है, पर पेशन्स सोंग होत नाही बर का, हे मला SM सरांनी सांगितलेलं। मग झुमरी म्हणायला लागली की असं कसं चालणार रे बाळा, काहीतरी काढ सोल्यूशन, नाही तर होणार भयंकर राडा। अब झुमरू और झुमरी आ गए असमंजस में। झुमरी wants to purchase the goods from Jhumru. Jhumru is not ready to sell because it is on credit and whether the money will be recoverable or not. तो इन दोनों ने सॉल्यूशन निकाला। झुमरू ने अपने ड्रॉवर से एक पेपर निकाला, उस पेपर पे कुछ लिख डाला। झुमरी से कहा, इस पे सही कर दे और ले जा अपना माला। So all said and done, what has happened now? Understand and observe. कहानी बहुत हो गई, अब जरा रियलिटी में आते हैं। So what happened? Jhumru sells the goods on credit. But because Jhumru is not confident about the recovery, for that purpose, what Jhumru is doing along with that? He draws
a document on Jhumri and this document is accepted by Jhumri in favor of Jhumru. In this case, Jhumru will become the person who is drawing the document or not. Therefore, he is called as a drawer. So, supplier or creditor of the goods is generally the drawer of the bill, right? Whereas Jhumri, the person who has bought the goods, is the person on whom the bill is drawn. Therefore, Jhumri will be called as drawee. And therefore, Jhumri, that is the buyer or debtor, is what we call as the drawee. Am I going good with everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, what Jhumru can do with this accepted document, I have very categorically written that it must be accepted. Because if a bill of exchange is not accepted, it is called as a null and void document. And therefore, the acceptance of a bill of exchange is must. Am I right? Now, this bill, as it is transferable from one person to another, therefore, it is called as bill of exchange. Right? Yes, sir. Now, what Jhumru can do? Suppose Jhumru is having this chota sa table, right? And in this table, he is having a drawer. What Jhumru does? He opens this drawer, takes this bill and keeps the bill in his own drawer. In this case, it is called as bill retained. When Jhumru does not transfer that particular bill, that particular document to anyone else and keeps it with himself, that is what we call as bill retained, right? वो हुआ यूं कि बिल गेट्स भाई साहब जो है ना, ये हवाई के बीचेस से डायरेक्ट गोवा के बीचेस पे आए, पर हवाई के बीचेस से पहले ये दिल्ली गए, वहां पे इन्होंने अपना पूरा मेकओवर करवाया और जो उनका पहले का रंग था उसमें वापस से आ गए और वहां से वापस गोवा के बीचेस पे चले गए तो ये वापस से टैन हो गए. That is why it is called as bill retanned. No? So, this is bill retained. The second, अब क्या है ना, वो पुराने लोग सामने आए तो पुरानी बातें याद आना चालू हो जाती है, राइट? पहले सुनाया हुआ है लोगों को, पर क्या है, अब सामने आए हैं तो फिर रोक नहीं सकता है ना बंदा. That's why. सर काही नवीन माणसं पण आहेत की. हाँ, काही नवीन पण आहे, ते पण खरे. सॉरी हाँ अमोघ. तो का So one thing that Mr. Jhumru, the drawer of the bill, can do is retain that bill with himself. अब हुआ यूं कि झुमरू भाई साहब की एक क्रेडिटर थी. क्या नाम है इस क्रेडिटर का? चंपा. बड़े समझदार बच्चे हो तुम लोग, तो मतलब ऐसे खतरनाक समझ जाते हो वास्तव में दिमाग में क्या चल रहा है. तो ये सब बचपन से इसे कैसे भूल सकते हैं सर? सर आपके स्टूडेंट्स जो है. हाँ ना, कभी घमंड नहीं किया सर. हाँ ना.
अरे मुझे एक बात समझ नहीं आती, सारे के सारे अगर आपके स्टूडेंट हो जाएंगे तो बीजेपी के बाद कौन रहेगा? दैट विल बी अ प्रॉब्लम और नॉट? असो सर काँग्रेसचे आहेत ना माणसं. नको 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 बाबा नको. आलू डालेंगे पुन्हा निकलेगा. कांग्रेस वाला दूर से अच्छे. कहाँ तू मतलब गुड़ गोबर मत कर यार, सब सही चल रहा है, सही चलने दे. आलू डालेंगे सोना निकलेगा. असो वो उसका आलू अभी तक के सोना ही बन रहा है. सर सोना नावाचं चिप्सचं नाव असेल. अच्छा असं होय. मला आता कळले. काय तू सांगितलं राव. मला कळच नव्हतं आतापर्यंत. काय म्हणजे खरंच चांगलं सांगितलं. या पुढच्या वेळी लक्ष देईन. असो ऍक्च्युली आमच्याकडे ना BMW सगळ्यांकडे आहेत. आणि आम्ही भयंकर खातो, पण काय आहे ना ते म्हणजे ते सोना मला कधी कळलंच नाही. आता पुढे लक्षात ठेवून मी. बर पुढे जाऊ का आता? नाव चंपा who is the creditor of झुमरू. इससे आप ट्रायंगल मत समझना, नहीं तो तुम कहोगे ये तो ट्रायंगलवा बन गया. आज रक्षाबंधन का दिन है, भगवान भला करे कि देखो अभी सुबोध सर का पोस्ट आया है 235. ये देखो सुबोध सर जाके आए, दिख रहा है तुम लोग को? यस सर. येस सर. यस सर. हाँ ना, देखो ना कैसे मतलब लगता है बंदा 55 साल का है. अरे हमारी गैंग भी गई थी. आपने गए सर? पुरानी गैंग थी. अरे अभिषेक सर भी गए थे आज. हाँ यस सर. सर. यस सर. हमको इनविटेशन था. अरे मेरे को उन्होंने- हमको इनविटेशन था सर. मेरे को नहीं बोला इन्होंने. चीटिंग आपको भूल चीटिंग. गए. उनका लेक्चर था ना सर. गजब बेइज्जती. नहीं चीटिंग. अभी मैं पूरा बता. भूल गए. नेक्स्ट संडे में जाएगा और इनको नहीं बताएगा. सर ग्रुप फोटो Revenge. अकेले जाएंगे सर. हम जाते नेक्स्ट संडे. हाँ. बिल्कुल जाएंगे अपन. बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे नहीं अपन, चुपचाप पे निकल चलेंगे एकदम पतली गली से. किसी को सर जीबी सर को लेने का. नहीं जीबी सर नहीं चलते हैं, बिकॉज उनके गुड़गे में प्रॉब्लम होता है. गाड़ी लेके जाएंगे. एसएम सर. नहीं गाड़ी लेके जाने में फिर क्या मतलब हुआ? फिर सिंगर तू घर पे ही बैठ ना, फिर गाड़ी लेके. अरे जीबी सर के लिए यार मतलब कैसे लोग रे, मतलब कहाँ से आते हैं ये लोग? कौन है ये लोग? असो तो चंपा हु इज द क्रेडिटर ऑफ झुमरू, इसने झुमरू को फोन किया. झुमरू किधर है? झुमरू कहता है मैं यार घर पे हूँ, लॉकडाउन चल रहा है, लोग बाहर नहीं निकल रहे, तो ऐसे क्या करी कि घर पे बैठा हूँ. चंपा कहती है मेरा पैसा कब देगा? झुमरू कहता मनी इल्ला नहीं देगा. चंपा कहती यार ये तो हालत ही हो गई, इधर पहले लॉकडाउन लगा हुआ है, पैसे की किल्लत चल रही है, जब तेरे को फोन करती हूँ तब तू बोलता है मनी इल्ला. मतलब व्हाट इज दिस नॉनसेंस? तू कब मेरा पैसा देगा? झुमरू कहता है यार इतना चिड़चिड़ क्यों कर रही है, तू क्यों परेशान कर रही है मुझे? चंपा कहती है यार परेशानी की क्या बात है, मतलब तेरे से पैसा लेना बाकी में वो पैसा मांग रही है, उसमें परेशान करने वाली क्या बात है? हाँ मिलेगा. नहीं मिलेगा नहीं, मेरे को पैसा चाहिए अभी के अभी. और जैसे चंपा ने ये कहा, झुमरू कहता है यार अब तो बात बिगड़ने वाली है, नहीं तो चंपा का कनेक्ट टूट जाएगा. कनेक्शन तो तोड़ने नहीं देना है. तो झुमरू ने सोचा चंपा एक बात बताऊं, मेरे पास ना झुमरी का एक्सेप्टेंस है. चंपा कहती है गद्दारी, मेरे को छोड़ के तू झुमरी के पास जा रहा है, उसको प्रपोज कर दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया. अरे वो वाला नहीं रे, तू क्या गलत समझ रही, किधर का कनेक्शन किधर लगा रही चंपा? आई एम हैविंग द बिल एक्सेप्टेड बाय झुमरी. ओ चंपा कहती है फिर क्या करना है? तू बिल तू रख ले, तू जाके बैंक से डिस्काउंट करा ले, या फिर चंपा से पैसा झुमरी से पैसा ले लेना. चंपा सोचती है यार इससे पैसा निकलवाना तो मुश्किल है, झुमरी पैसा दे देगी. तो व्हाट झुमरू इज डूइंग? झुमरू ट्रांसफर्स द बिल टू चंपा. In this case, this is the procedure we call as bill endorsed.
Endorsement means what? Transferring the possession and right of recovery into the bill. That is what we call as endorsement. In this case, the person who is transferring the bill is called as endorser. And the person to whom the bill is transferred is called as endorsee. Right? जब तुम्हारी इंटरमीडिएट की क्लासेस खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम अभी फाउंडेशन पास हो जाओगे ना दिसंबर में, जनवरी से तुम्हारा इंटरमीडिएट का क्लासेस चालू हो जाएगा, जुलाई में तुम्हारी इंटरमीडिएट की क्लासेस खत्म हो जाएगी, उसके कुछ दिन पहले हम लोग गोवा जाएंगे। कब? जून महीने में। और जब हम गोवा जाएंगे तो हम वहां क्या पाएंगे? सी Either the end or the sea. End or sea. Right. नहीं, पर मैं फेक नहीं रहा हूं, ये सच बात बता रहा हूं। मतलब हम लोग सच में जाएंगे और गोवा में क्या करेंगे? सब मजा करेंगे, कोई झोपड़ा नहीं बांधेंगे, बिना झोपड़ा मजा करेंगे। वेल, जून में बारिश होती है, पता है मेरे को। लॉकडाउन हुआ तो कौन था ये? कौन था? Who was it? लॉकडाउन वाला? सर ईशा। ईशा, तू ना ऐसे हमारे सपनों पे ना ऐसे तू पनौती मत बोल यार। मतलब सच में हम लोग इतने बड़े बड़े ख्वाब बना रहे हैं, हम लोग इतने दिल से इतना मन बना रहे हैं कि हम लोग गोवा जाएंगे, मजे करेंगे, और तू बोलती है लॉकडाउन। ना, ये सुनने के पहले ये लेक्चर का नेटवर्क चला क्यों नहीं गया? नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होने देंगे हम लोग अभी। नहीं होगा सर, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सर जैसे पहले जाया करते थे एकदम 9-9 10-10 बसेस एक साथ लागो पाठ, वैसे ही एक बार फिर गोवा जाएंगे और बहुत मजा करेंगे, सिरियसली जाएंगे। सर पेई नावाची कॉन्सेप्ट असते बघा याच्यामध्ये। अरे थांब ना बा, शिकवतोय ना, तू जरा धीर धर की। सर इवन आई विल जॉइन यू सर। नहीं, बाकी कोई जाए नहीं जाए, ईशा अपन जाएंगे अभी। मैं तेरे को उधर कर्नाटक से उठा के लेके जाएगा। श्योर सर। हाँ, उधर से मैं कार लेके आएगा, उधर से जाएंगे अपन। राइट? सर इधर से 3 घंटे का ही रास्ता है। हाँ मालूम है मेरे को। उधर बेलगाम एरिया है ना, बेलगाम वाला रास्ता अच्छा है, चोरला घाट वाला। यस सर। वेल एनीवेज, यार कहाँ हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज सीख रहे हैं, कहाँ गोवा की बातें कर रहे हैं। असो, पर जरूर जाएंगे। गोवा इज गोवा, यू नो, it has a different feel altogether. It is a different meaning altogether. Yes, sir. So there can be a situation where a person is transferring the bill from himself, not only the possession but also the ownership of that, and that process is what we call as endorsement. Right? अब सपोज झुमरू भाई साहब को अर्जेंट पैसे की नीड है, झुमरू भाई साहब को पैसा चाहिए अभी के अभी, तो झुमरू भाई साहब गोज टू बैंक ऑफ झुमरी तलैया। राइट? Now, when he goes to Bank of Jhumri Talaiya, वो बैंक के मैनेजर से मिलता है, बैंक के मैनेजर से पूछता है, हे बैंकर, आई एम इन नीड ऑफ अर्जेंट फंड्स। बैंक मैनेजर कहता है, हे ग्राहक, आपका अकाउंट नंबर बताइए। बैंक का मैनेजर झुमरू कहता है, हे बैंकर, आई डोंट हैव अकाउंट विथ यू। बैंकर कहता है, हे ग्राहक, आई डोंट हैव मनी फॉर यू। अब झुमरू कहता है, यार आता माझी साठकली,
मैं तेरे को बोल रहा है मेरे को पैसा चाहिए अभी के अभी, बैंकर कहता है यार मैं ऐसा पैसा नहीं दे सकता हूँ किसी को भी, कुछ तो प्रूफ चाहिए, कुछ तो काइंड ऑफ सपोर्ट चाहिए, कुछ तो काइंड ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, उसके बगैर अरे लाया है ना सिक्योरिटी, जरा धीरे धीरे रहे, इतने क्या गाय करता है। नाउ इन दिस केस द बैंकर takes that bill and from that bill amount he reduces certain charges called as discounting charges and gives the balance to Jhumru, to drawer, right? But on the due date he will recover bill amount from the drawee. Am I right with everyone? Yes, sir. Yes, sir. Process what we call as bill discounting. Now, Mr. Amog was mentioning the point that there is someone called as payee. Every bill of exchange primarily has three parties. The person who draws that bill, the person on whom the bill is drawn, and the person to whom the amount is payable on the due date. That is called as payee. So in this case, whenever the bill is endorsed, whenever the bill is discounted, in such a situation, the endorsee or the bank will become the payee into that particular bill. However, if the bill is retained by the drawer with himself, if the drawer does not transfer that bill to anyone else, then in that case, drawer himself is called as the payee of that particular bill of exchange. Am I clear for everyone? Yes, Yes. sir. Yes, sir. So, a bill of exchange can be retained by the drawer himself. A bill of exchange can be endorsed by the drawer to his creditors. A bill of exchange can be discounted by the drawer. In some cases, a drawer may find himself unable to collect the money on due date. In such situations, what drawer does is he appoints an agent. Agent Binod. And this agent Binod is given the bill only for collection. So there is a difference between bill discounted and bill sent for collection. Why? Because in this case, as the drawer himself is unable, therefore he is just appointing the agent. तू जा और मेरे behalf पे पैसा collect करके आ. Only the possession is transferred. The ownership of the bill still remains with the drawer or the holder of that bill. In this case, the agent, who can be a bank also, the agent does not charge the interest. क्योंकि जब हम discount की बात करते हैं, the discount is calculated at a given interest rate. Discount is equal to bill amount into rate of interest, which will be given to you, into balance bill period. Why am I writing balance bill period? It is not necessary that you will be discounting it on the date of bill. Therefore, balance bill period divide by 12 months if it is drawn payable after a particular number of months, or 365 days if it is drawn payable after certain number of days, right?
Now, in this case, the agent will collect the money from the drawee and will pay that money to the drawer, and against that, it will charge only certain small amount of fee, which is not equivalent to the discounting amount. So that's the difference between bill discounted and bill sent for collection. One more point of distinction between the two is, in case of bill discounted, the money is paid immediately by the bank to the drawer, whereas in case of the bill sent for collection, the money will be paid only if it is collected from the drawee. So agent does not become the payee. The payee in case of the bill sent for collection remains the drawer himself. Did you people understand all these concepts? येस सर, Yes, sir. करू शकता का? Sorry. हा सर, म्हणजे फोटो काढून घेतो नंतर थोडं. Done, sir. Shall I come ahead? डन सर. Yes, sir. Just a medium of flows, correct? Okay. So, drawer, person who draws bill. Drawee, person on whom bill is drawn. Payee, person to whom amount is payable on due date. Due date, date on which liability against bill against the bill to be discharged. Holder in due course. Person who holds the bill till its maturity. That person is called as holder in due course. Owner of bill. Bill discharged on due date. अगर ड्रॉई ने बिल के अगेंस्ट का पैसा ड्यू डेट पे दे दिया, दैट विल बी ऑनर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज. This honor of bill, amount payable against the bill is not discharged by drawee
on due date. Right? So whenever there is a dishonor of a bill, in such case, the person who is the holder in due course, it can be the drawer himself, it can be the bank, it can be the endorsee. These persons can go to an authority called as notary public. For what purpose? For enforcing the recovery against that bill. And that is what we call as noting of the bill. The noting of the bill is done against a particular fee or charge called as noting charge. This noting charge is primarily paid by the holder in due course. However, it is the expense of the drawee. क्योंकि नोटिंग चार्जेस का खर्च किस वजह से हुआ? ड्रॉई के डिसऑनर की वजह से हुआ है नहीं? Therefore, noting charges is considered as the expense of the drawee. However, it is not paid immediately by the drawee. It is paid on dishonor by the holder in due course, which can be the drawer himself, which can be the bank, which can be the endorsee. Am I clear on this? Yes, sir. Yes, sir. So, noting charges. Amount payable to notary public on dishonor of a bill. Paid by holder in due course and recovered ultimately from drawee. Therefore, it is the expense of drawee. Is the point right? So only in dishonor case noting charges will be there. Of course, if there is no dishonor, then there is no question of noting charges. Why bank will do discounting? Because bank is getting interest in that or not. Bank ka basic dhanda kya? To earn the interest or not. And Yes, sir. as bank's basic business is to earn interest, therefore they do the discounting of bill. Holder in due course could change from time to time during the tenure of bill. Of course, that is where the play of endorsement or discounting comes or not, Ashutosh. So you can have multiple holders in due course, but the person who is holding it till its maturity is what we ultimately call as holder in due course. Right? Who is Sir? who becomes the ultimate payee into that particular bill? Manthan, go ahead. सर कलेक्शन को भेजा फिर उस बंदे को जो पैसा देंगे वो भी डिस्काउंट होगा ना? Nahi, that is the fee paid for the purpose of collection, because that is not calculated with reference to the tenure or interest or something like that. Because he's not getting the right of collection, he's only getting the responsibility of collection. You're not transferring the bill to him. You're only giving him the responsibility of collecting the money. That's the difference. कलेक्शन चार्जेस कहेंगे क्या? Sorry? क्या कहेंगे फिर उस चार्जेस को? That is bank charges or normal fees, collection charges. Okay, sir. Holder would be, yeah, last holder will be called as the holder in due course. Ashutosh, absolutely correct. So this is how that particular thing is dealt with when it comes to bills of exchange. I hope the base concept is quite clear for everyone. Yes, sir. The various terminologies are also clear.
For the annual batch students who are there, they are getting it revised because it was done in the last year. And for the regular batch students, they have also been doing it for so many days now that that must be clear. On Monday, I have scheduled a test as well. That is tomorrow. क्योंकि लेक्चर है सुबह 7:30 बजे, है ना? तो तुम लोगों के लिए एक टेस्ट भी तैयार की है मैंने. I'll just tell you the chapters of that. Whomsoever, do you regular 1, 2, do you people want to give that test? Yes, sir. Yes. So I'll, Yes, sir. Yes, sir. I'll send it there also. एनुअल बैच वालों के लिए तो बड़ी पांचट सी टेस्ट होगी, तो एनुअल बैच वाले नहीं भी दें, विल पुट इट. ओके, एनुअल बैच में भी डाल देगा मैं. टेस्ट इज ऑफ 40 marks, 1 hour and 30 minutes, and the chapters are chapter 2 and 3, accounting process, rectification of errors, and BRS. Okay, sir. Yes. अकाउंटिंग प्रोसेस आणि BRS ना आणि rectification of error. Accounting process, rectification, BRS. These will be the chapters for your test tomorrow. So dual time we are meeting. One time we'll be meeting, one time you'll be, and timing is up to you. When do you want to give the test? I would suggest that you give it between that 2:30 to 4. वैसे भी तुम्हारे पास blank time है, so you give the test at that time. I'll be uploading the test at that time. आशुतोष, उद्या फक्त मला 2 वाजता आठवण कर की 2:30 वाजता पेपर पाठवायचा म्हणून. सर कितने marks का? अमोघ 2:30 बजे पेपर भेजना है. ओके सर. आशुतोष फिर को याद submit दिला करना देना है. मेरे को, तो मतलब एनुअल में भी डाल देगा मैं. क्लास मॉर्निंग होगी. क्लास फॉर टुमारो विल बी इन द मॉर्निंग 7:30 to 9, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे पहुंचेगा तो 7 बजे तक रिलैक्स हो जाएगा. 7:30 से 9 आई विल बी टेकिंग द लेक्चर. Sir, on which सर link? चाणक्य की विवेकानंद. विवेकानंद लिंक ओनली बिकॉज चाणक्य पे तो लेक्चर चल रहे होंगे उस समय पे. ओके सर. हाँ, ओके. Sir, what time we should submit? प्रिया टॉक ऑफिस सबमिशन के लिए मैं इंस्ट्रक्शन देगा ऑन द ग्रुप इटसेल्फ. Okay, sir. हाँ. Arshad, your question was what is noting charges, the explanation on that. See, what happens is whenever a bill gets dishonored, in that case, you need to enforce the recovery of that. And enforcing the recovery through the legal route, you have to initiate through the notary public. And for that purpose, you register that with the notary public, who charges the fee against that, which we call as the noting charges. And these noting charges will be paid. Suppose I am the holder in due course, I am the endorsee and I am the holder in due course. I will pay it, recover it from the drawer. Drawer will ultimately recover it from the drawee. That means it is the expense of drawee only or not. That is why I said that it is paid by holder in due course, but it is the expense of the drawee. Okay, Did you understand that? notary public means what, sir? Notary public is an authority assigned by the government to register the various legal documents. Okay, sir. Right? Yes. So that is it for the day. We'll be meeting tomorrow at 7:30. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Bye, sir. Tomorrow morning. Bye, sir. बाय सर.